Good morning, my dear students of class 9th. I am Poonam Prasad, your social science teacher. Children, today we are going to start with the very important topic of your political science that we call it as civics also. The chapter number 3, it is electoral politics. Children, earlier we have completed the 2 chapters, what democracy, why democracy, fine. Then we came across with the second chapter of your which are based on your constitutions, right? Now the very important is the electoral politics. Let's we have a very brief structure of this chapter. Children, the chapter is quite very important. Students, we talk on the chapter what we are going to deal with, the topics what we are going to deal with. Children, we are going to deal with the introduction of the chapter, which includes the entire, that is why do we need, as the name suggests, electoral politics. It means the politics in which the elections are played a very, very important role. Fine. Then we are going to, in the introduction also, then we are going to have a topic to be covered. Fine. That why do we need the elections? With reference to the case study, we have to go through with the case study of state assembly elections in Haryana. I am going to brief out about the entire case study. Fine, children, that the election played a very, very important role in the state assembly elections. Then, children, we are going to start with the elections, why the elections are important features in democracy, or can it make elections democratic? What are the scenario or what are the factors behind? Fine. And it is very good to have the political competition. Why it is better to have the political competitions, children, especially in our country, in India. Fine. Then comes to what makes the elections in India are democratic. In that particular point, we are going to have independent election commission, popular participation is there, acceptance of elections outcomes, it means the result of the elections. Popular participation means the leaders, the popular faces which are going to elect the contest the elections, children. Then चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये बहुत बड़ा चुनौती होता है कि हम जो भी चुनाव, पहली चीज़ तो चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव कराता है, और जब चुनाव आयोग क्या फेयर और फेयर इलेक्शन करा सकते हैं, या हमारी जो इतना बड़ा इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या इसमें इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सकते हैं. Then introduction में children we are going to have some sorts of questions. अगर दिमाग में questions आते हैं, जैसे कि children, it won't be possible for the people of a country, or what we call it as a citizen of a country, to sit together and to discuss on the topics. Fine. ये बहुत मुश्किल होता है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर एक भीड़ अगर प्रिंसिपल ऑफिस में घुसती है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, अगर आपकी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस में एज अ भीड़, एज अ रश, एज अ क्राउड के तौर पे पहुंचती है आपके प्रिंसिपल के रूम में अपनी कोई प्रॉब्लम को लेके, तो बेटा प्रिंसिपल सर स्ट्रेट अवे या मैडम स्ट्रेट अवे कहेंगी जस्ट लीव द रूम राइट नाउ. आप भीड़ मत इकट्ठा करिए, आप कमरे से बाहर जाइए, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपका आएगा और आपकी क्लास की प्रॉब्लम्स, यानी हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो यहाँ पे रह कर बाकी सब लोग क्लास से बाहर चले जाए. इट मीन्स दैट इट इज़ ट्रू बेटा, बिकॉज द क्वेश्चंस अराइजेस. फाइन. जैसे कि वाई एक्चुअली प्रॉब्लम, एक्चुअली ये क्वेश्चन अराइज कहाँ से हो रहा है? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है इलेक्शंस. इलेक्शन बहुत अभिन्न अंग है किसका?
पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री का, पॉलिटिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा ये इलेक्शंस क्या दे रहे हैं? ये इलेक्शंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फॉर्म करने का एक रास्ता दे रहे। इट इज़ अ पाथ टुवर्ड्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा, कैन द क्राउड ऑफ द पीपल बी एबल टू लिसन द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल? चिल्ड्रन, हियर द ग्रीवियंसेस मीन्स द प्रॉब्लम्स। कैन दैट crowd of the people able to solve the problems of the citizens? Can they make the policies and program? क्या वो हमारी जनता के लिए, ये जो भीड़ है, क्या वो हमारी जनता के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बना सकते हैं, या हमारे वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, या हमारी परेशानियों के बारे में सोच सकते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, फाइन, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, हमारे नेबर को मैंने कहा कि मैडम पानी नहीं आ रहा है, उन्होंने भी कहा पानी नहीं आ रहा है। हम ये प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाएंगे? अब यही अगर 10 घरों से लोग निकल कर आए और सिर्फ वो वहाँ पे डिस्कस हो के यही बात कहें कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, कि हम वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट वे हु इज़ गोइंग टू सॉल्व द सोल्यूशन? फाइन, सो द क्वेश्चन अराइजेस, फाइन, पीपल इन सोसाइटीज़ दे आर हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस। चिल्ड्रन, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे एज अ सिटीजन ऑफ एज अ लोकलाइट ऑफ माई कॉलोनी, मुझे ये लगेगा कि प्रॉपर स्ट्रीट लाइट जले, साफ़ सफाई हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, प्रॉपर पानी आए, सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना हो, गार्बेज डिस्पोजल अच्छा हो। ये जो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस है, वो हम एक्सपेक्टेशन किससे कहेंगे? गवर्नमेंट से, है ना। हमारे कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं एज अ सिटीजन, सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने आप को एज अ मैन पावर बनाने के लिए, एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ देगा, वो देगा कौन? Who is going to handle the problems, who is going to handle the development goals of the citizen, and who is going to solve, who is responsible to fulfill our expectations, children? Fine. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉज पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कौन ठीक करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा, क्या हम पीसफुल लाइफ जी सकते? बिकॉज अल्टीमेटली द एम ऑफ अ सिटीजन, ऑफ एन इंडिविजुअल, इज़ टू लिव अ हैप्पी लाइफ विद अ हारमोनियस मैनर इन अ सोसाइटी। वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह सके। Is that clear, children? In the next slide, I am going to tell you about more about the case study of your first case study, more about the introduction, in which we are going to have a very much deal with the why do we need to have elections. Fine, with the case study of your Haryana.